Today we can discuss about the world climate. In the first class in climatology, we have discussed about the structure. Atmosphere का structure कैसा है, इसका combination कैसा है. Here we have discussed about the atmospheric condition, different conditions like temperature का बारे में, insolation, heat budget, latitudinal heat distribution, ये सब के बारे में second class में पढ़ा है. And in the third class, we have discussed about the air masses. So almost उसमें pressure system, pressure, temperature ये सब पढ़ा है. Right now, with all these, we are going to discuss about the world climates. As different लोग ने ये तो different तरीके से ये world climate को divide किया है. Like कोपेंस ने, त्रिवार्ता ने, सब अपना अपना तरीके से. नहीं तो classical division है, लेकिन in our syllabus it is not mentioned. और एक particular आदमी का तो ऐसा mention नहीं किया है. So we are going to discuss in general what are the climatic types of the world. So ask, what is a climate first? So climate and weather, always we get confused. Somebody asks what is climate and what is weather, so then we will get confused. So weather is actually the state of atmosphere at a particular place at a particular time. वो atmosphere का condition कैसा है एक particular छोटा सा एक time में atmosphere का condition कैसा है एक particular जगह में. Then we can say that is weather. It includes atmosphere का उसी time में कितना temperature है, कितना cloud है, कितना pressure है उधर, कितना wind जा रहा है, अभी precipitation rainfall है उधर, ये सब चीज इसमें आ जाएगा weather में. But it when comes to the climate on say this is the average of weather for a long period of time. It's for a longer period of time के लिए ये weather कैसा है. This is not for a month or 2 months. This is for long year, means more than years, 10 years, 20 years, and usually we will take 30 years. 30 years as average. अभी 30 year में weather system कैसा है? That is called the climate. एक मिनट, थोड़ा बाहर से disturbance आ रहा है. So that is actually the climate. For short term, if we are studying about the atmospheric condition, that is actually weather, and for a long time it is climate. So today what we are going to discuss is this climate for long period. वो planet में हमारा climate कैसा है? That is what we want to discuss when we say about world climate. And within the climate, we have divided the climate area into different types based on the coverage. तो time होगा, ज्यादा time होने से we will say it as climate. So we don't want to bother about the time. We want to consider the spatial extension of the area that is being covered. Based on that, we have divided the climate into 4. That includes microclimate, local climate, mesoclimate, and macroclimate. Microclimate is that climatic condition of the smallest unit. Climatic condition of the smallest unit. इसमें होगा maximum 100 मीटर तक, 1 मीटर तक से 100 मीटर तक horizontal distribution है इसका. Along with that 1 meter to 100 meter vertical extension है इसका. तो हो गया एक तो बॉक्स जैसा हो गया ऐसा 1 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, ऊपर देखने से 1 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर इसका विड्थ है. So it's a small unit actually. That is called the microclimatic zones or microclimatic area. Then comes the second group, that is local climate. Local climate, अभी एक local climatic
लोकल क्लाइमेट बोलने से दिस इंक्लूड एरियाज विथ फ्यू माइक्रो क्लाइमेटिक रीजन। जो माइक्रो क्लाइमेटिक रीजन 1 2 3 तो मैक्सिमम 5 तक होगा, उतना माइक्रो क्लाइमेटिक रीजन मिला के एक पर्टिकुलर छोटा सा जगह में, अभी बोलने से ईटानगर वो एरिया में कैसा है, दैट इज लोकल। अभी उसके बाद चिंबू में कैसा है, नहीं ये तो अभी से ये नगर लगन में कैसा है, वो छोटा छोटा एरिया है। तो ऐसा माइक्रो एरिया को मिक्स करके जो आता है दैट इज कॉल्ड द लोकल। सो इसका लैटिट्यूड एक्सटेंशन कितना है, तो यहाँ 100 बोल दिया था, तो इट विल कम अप टू, ये तो 100 मीटर था, ये तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन है, मल्टीप्लाई हो गया। एंड द हाइट रिमेन्स द ऑलमोस्ट 100, तो इसमें से 1 किलोमीटर तक इसका ऊपर भी आ जाएगा, तो हाइट बढ़ गया है इसका। देन कम्स द मेसो क्लाइमेट। मेसो मीन्स इट इज बिटवीन मीडियम क्लाइमेटिक एरिया। तो एरिया हो गया मीडियम साइज का, माइक्रो हो गया बहुत छोटा, लोकल हो गया छोटा, एंड मेसो मीन्स मीडियम साइज का क्लाइमेटिक एरिया। सो इट कंप्राइजेस ऑफ 1000 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर। तो और ज्यादा बढ़ गया है जैसे, and the vertical heights goes to up to 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक आ गया, उतना ऊपर तक। तो इट्स कंप्राइज ऑफ ए बिगर एरिया, मच बिगर एरिया। लाइक अभी पपुमपारा ये डिस्ट्रिक्ट में कितना है, ये सब हो गया मेसो, उतना एरिया को कवर करेगा, उतना स्क्वायर किलोमीटर को कवर करेगा, that is called mesoclimatic region. And then comes finally the macroclimatic region. It can be also termed as climatic region or the geographical climatic region. Why it is so called? Because it consists of several meso type का जो regions है। अभी हिमालय, तो हिमालय covers a huge physiographical division। तो ये इतना बड़ा होगा, वो हिमालयन का अपना एक क्लाइमेटिक टाइप होगा। इसमें से विद इन दिस क्लाइमेटिक टाइप देयर आर डिफरेंट स्मॉल क्लाइमेटिक यूनिट है। तो उतना बड़ा एरिया को वी विल से इट एज मैक्रो क्लाइमेटिक रीजन। कंप्राइज इसका एक्सटेंशन देखो, इट स्टार्ट फ्रॉम 20 किलोमीटर्स टू समटाइम्स इट गोस टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर लेंथ हो गया एंड 6 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर हाइट हो गया। दैट मीन्स हम बोल दिया ट्रोपोस्फियर का 5 to 15 है, तो लोअर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फियर बोल सकता है। तो उतना हाइट तक इसका एक्सटेंशन है एक क्लाइमेट का, दैट मच बिगर कंसेप्ट। सो व्हेन वी से अबाउट वर्ल्ड्स क्लाइमेटिक जोन्स, वी यूजुअली गो फॉर दिस कंसेप्ट, द मैक्रो क्लाइमेटिक जोन्स और geographical climatic zones. So ये हो गया इसका एरियल एक्सटेंशन। तो क्लाइमेट का क्या है, लॉन्ग टर्म, मोर देन 30 years हो गया। देन वी आर गोइंग फॉर कौन सी वाला है, माइक्रो क्लाइमेटिक रीजन है, तो एरिया कवर्ड विल बी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर है एंड विद ए हाइट ऑफ 6, मिनिमम 6 किलोमीटर वर्टिकल एक्सटेंशन है। तो 6 किलोमीटर से ऊपर तक ट्रोपोस्फियर का जो अपर एरिया है 15 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन होगा, दैट मच बिगर एरिया हो गया, दैट मच लॉन्गर टाइम हो गया। नाउ व्हेन वी डिवाइड द अर्थ क्लाइमेटिक रीजन, इसका तो ये पढ़ने के लिए देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस। इन द अर्ली टाइम्स देयर वर क्लासिकल अप्रोचेस था, वो लोग अपना से कुछ सोच के कर रहा था, उसके बाद कुछ ऑब्जर्व करके ये तो ऐसा है, अभी इस सीजन में बारिश हो रहा है कंटिन्यूस, अभी वो 10 years पड़ा है, 20 years पड़ा है, तो हाँ यस इस महीने पे यहाँ बारिश हो रहा है तो क्लाइमेट ऐसा होगा, तो ऐसा पड़ा है, तो देयर विल बी ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद क्या हो गया, टूल्स यूज करने शुरू किया है, जैसे वो रेन गेजेस यूज किया है, तो रेन पुराना वाला जो रेन गेजेस है वो यूज करना शुरू किया है, नहीं सो हाइड्रोग्राफ, क्लाइमोग्राफ ये सब बनाना शुरू किया है।
डिफरेंट ग्राफ्स बनाना शुरू किया है। फिर क्या हो गया, फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गया, सैटेलाइट सिस्टम्स आ गया, तो प्रेडिक्शन बिकम मोर एक्यूरेट, climatic prediction become more accurate, climatic classification become more accurate. So in general, we have combined all these, and we have mainly three types of climatic classification or approaches for climatic classification work. One is empirical approach based on observation of data. अभी एक साल में देख दिया, दो साल में देख लिया, 3 साल में देख लिया, ऐसे बहुत साल देख लिया, तो ऑब्जर्व कर दिया ऐसा एक पर्टिकुलर पैटर्न हो रहा है, कंटिन्यूअस ऐसा यहाँ आ रहा है, तो दैट काइंड ऑफ समथिंग एम्पिरिकल, ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा यस यस नो, ऐसा ऐसा कंटिन्यू ऑब्जर्व करके व्हेन वी हैव डिसाइडेड दैट काइंड ऑफ डिसीजन ऑफ क्लासिफिकेशन, वी कैन से इट एज एम्पिरिकल अप्रोच. देन कम्स द जेनेटिक अप्रोच. जेनेटिक अप्रोच ये होगा causes of climatic variation. ये कैसे हो रहा है, ये तो चेंजेस ऐसा है, बट व्हाई दिस हैपेंस. अभी कल मानसून के बारे में बोल दिया है, तो इसमें हो गया थर्मल थियरी के बारे में बोल दिया है, वो थर्मल अप्रोच क्या है, देयर इज लैंड ऑन वाटर, दोनों के बीच में अभी वो लेटेंट हीट का डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ दैट मानसून इज हैपनिंग. So that they have find some kind of causes for that particular climate. मानसून कैसे हो रहा है, इसका एक तो अप्रोच और इसका एक ऑब्जर्वेशन करके इसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है. बिकॉज ऑफ दिस मानसून इज हैपनिंग, ऐसा बोल दिया, तो क्या है, causes of climatic variation, they have find it out. That kind of approach we can say it as genetic approach. And finally, numerical or quantitative approach. How this analyzing the numerical meteorological data, जो meteorological data से जो numerical value आ रहा है, and ये तो material data कहाँ से collect करेगा, with the use of modern technologies. With the use of modern technologies. अभी 10 दिन का वेदर हमको प्रेडिक्ट करना है, हाउ वी कैन डू दैट. अभी गूगल में देखो, उधर बहुत कुछ एप्लीकेशन है, नहीं तो बहुत कुछ वेब पेजेस है, उधर जाने से दे विल प्रेडिक्ट इट. अभी 10 दिन के लिए बारिश है, नहीं तो यहाँ मिस्ट है, यहाँ फॉग है, नहीं तो यहाँ अभी टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस है, अभी 10 बजे यहाँ बारिश होने वाला है. दे आर प्रेडिक्टिंग इट ऑलवेज. हाउ? Because with the use of modern technologies. Abhi satellite system, there is for climate observing the weather itself, there is individual satellites होगा ये observe करने के लिए. So ऐसा हमारा development हो गया. So that kind of approach that will give most accurate data regarding the climate. The precision has been increased. That kind of data we can say it as numerical approach. So these are the 3 major type of approach for climatic classification. One is empirical approach, second one is genetic approach, and third one is numerical approach. So अभी ये भी हो गया. Now we can go for aerial extension. Time हो गया, time कितना है, area कितना है, ये सब पढ़ा है. Now we can go for the world climates. For climatic region क्या क्या है. लास्ट क्लास में वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रेशर बेल्ट. इसमें बोल दिया दिस इज इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ क्या है, देयर इज लो प्रेशर है, एंड इसका टेम्परेचर ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है इधर. एंड एट द पोलर रीजन टेम्परेचर इज वेरी लो. एट द सेम टाइम एज द टेम्परेचर इज हाई, प्रेशर यहाँ कम है, लो प्रेशर है, एंड यहाँ प्रेशर हाई है. ये भी पड़ गया. सो दीज आर ऑल द phenomena that happen for a weather. वो एटमॉस्फेयर में happen, that is occurring in atmosphere. तो टेम्परेचर, लो प्रेशर, ये सब इसमें ही आ रहा है. एंड द प्रेसिपिटेशन, अभी टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वाटर वेपर विल बी गेट इवापोरेटेड,
and due to convectional movement वो ऊपर जाएगा and precipitation due to condensation and precipitation will happen. So there will be a rainfall because of high temperature. So temperature distribution भी ज्यादा हो गया. So how it will be distributed? अभी if it is an equatorial region, there will be high temperature, low pressure, and there will be high precipitation. Precipitation भी ज्यादा होगा. तो दूसरा है अभी कॉन्टिनेंटल एयर मास जब पढ़ा है उसके साथ वी हैव डिस्कस अबाउट द मेरीटाइम पढ़ा है, मेरीटाइम एयर मास भी पढ़ा है, क्या है कॉन्टिनेंटल एयर मास भी पढ़ा है. तो उसी टाइम बोल दिया है मेरीटाइम है तो उधर वो वेट कंडीशन होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा. सो एरिया which is surrounded by oceanic body or water body or the area above this water body have high moisture content. So we can relate these all these temperature, pressure, temperature हो गया, pressure हो गया, precipitation हो गया, ये सब is closely related. अभी ज्यादा moisture content है, ज्यादा oceanic region है, उधर ज्यादा temperature है, तो क्या होगा? There will be evaporation, there will be condensation, and there will be precipitation. तो यहाँ से कैसे wind का कैसे movement है, high pressure से low pressure तक, ये भी we have discussed later. So based on all these factors like temperature, pressure, precipitation, humidity, the amount of moisture content at a particular area में, वो air atmosphere में कितना है moisture content, that is the humidity. So ये सब consider करके we have divided the world climate into 5 classes. One is tropical, second one is dry, third one is mid latitudinal, fourth one is high latitudinal, and fifth one is high lands. So we can ये दोनों, let it be E and D can be discussed later. ये तो अभी बहुत है, लेकिन tropical तो it is near to equatorial area on the both side, 0 degree to 15 to 30 degree तक we can go for the tropical. It varies, maximum up to 25-30 degree तक. Usually we can say 5 to 50 degree Celsius tropical region है, near to equatorial region है. So that area, tropical area. यहाँ climate कैसे होगा? If you think, you can understand. उधर temperature will be high because it is near to equator, so temperature high होगा. Precipitation will also be high. Precipitation उधर ज़्यादा होगा. Next, moisture content, अभी oceanic region है, वो उधर तो क्या होगा? उधर humidity भी high होगा, जो पूरे जगह पे नहीं है. Whether there is too much the presence of ocean और water body है तो उधर moisture content भी ज़्यादा होगा, and there will be wind blowing. यहाँ से we know that intertropical convergence ये सब है. So when we say about, we don't usually go for the winds, but we will go for temperature and precipitation. So tropical region में समझ में आया कि यहाँ temperature ज़्यादा होगा, precipitation ज़्यादा होगा. Then comes the mid latitude. Mid latitude ये जो region है, that will be 25 to 55 ये region mid latitudinal areas है. यहाँ कैसे होगा? टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, ज्यादा कंपैरेटिवली मॉडरेट होगा. हाई प्रेशर से अभी लो प्रेशर, ये इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो उधर से व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स द टेम्परेचर विल स्लोली डिक्रीज. तो मिड लैटिट्यूड एरिया में कैसे होगा? टेम्परेचर मॉडरेट होगा. as the temperature is low, there will be less chance, वो precipitation भी comparatively less होगा, इक्वेटोरियल से comparatively less होगा this mid latitudinal areas में. When there is too much of continent, क्या होगा? Air will be dry होगा, तो moisture humidity कम होगा. If it is near to the oceanic part, उधर भी humidity ज्यादा होगा. So humidity we can say only based on the land and oceanic surface. Remaining we can say
इन मिड लैटिट्यूड क्या ऐसा है, टेम्परेचर एवरेज होगा, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा. एंड व्हेन वी गो टू द पोलर रीजन, टेम्परेचर लोवेस्ट. अभी आर्टिक रीजन हो, जो भी रीजन, दैट इज वी विल से इट एज हाई अल्टीट्यूड, हाई लैटिट्यूडल एरियाज. हाई लैटिट्यूडल एरियाज मीन ये जो जगह है अभी 65 से ऊपर नहीं, ये तो 75-80 के ऊपर जो भी एरिया हो, दैट इज कॉल्ड हाई लैटिट्यूड. 90 डिग्री मीन्स हाई, तो हाई लैटिट्यूडल एरिया. यहाँ कैसे होगा, टेम्परेचर कम होगा, बहुत कम होगा. इक्वेटोरियल रीजन में हाई, मिड लैटिट्यूड में मॉडरेट, एंड एट पोलर रीजन और हाई लैटिट्यूड रीजन में टेम्परेचर इज वेरी लो. तो कैसे प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन भी कम होगा, उधर टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, तो देयर विल नॉट बी एनी मूवमेंट, टू मच ऑफ मूवमेंट तो ज्यादा वो नहीं है. तो कंपैरेटिवली precipitation, I am not saying there is no precipitation, there is precipitation, but the amount is very less. And what kind of precipitation is there? There will be ice falls, नहीं तो snow falls होगा उसी region में. So these are the basic divisions: tropical area, mid latitudinal area, and the high latitudinal area. Then comes two more categories. One is dry region, and second one is highland. तो dry area कैसा है, उधर I said if it is a continent, continent है, and if it is the center of continent, उधर moisture content ज्यादा कम होगा. दूसरा है the wind can't move at that particular area, वो area में wind का movement limited होगा, that will be the leeward side. Then also उधर पानी atmosphere में moisture content कम होगा, so that area can be considered dry. So dry area we usually have a name, that is desert, नहीं तो arid region बोलेगा. And also one more dry area but comparatively moisturized, that is semi-arid regions. So dry area means both this arid region, semi-arid region, or the semi-arid region, arid region, or the desert region. That comes under dry. Then last one, highland. What is this highland stands for? Highland stands for the mountainous area. तो जहां भी हो, अभी all these are related to the horizontal distribution, but highlands, I told you when we studied about the normal lapse rate, तो नीचे से ऊपर जाते समय क्या होगा, there will be decrease in the temperature decrease होगा. Like अभी Himalayan at the top of the Himalaya there is glaciers, ice capped area है. But when we move down, there will be वो moderate climate होगा, सब नीचे आ जाने से very high temperature zones भी होगा. It's based on the altitude. So highland का climate will vary based on the altitude. Altitude का difference होने से the mountain climate और the highland climate का ये change होगा climate. So these are the 5 major division of climate of the world: tropical, midland, highland. This is horizontal. Then based on the dryness, we have desert, semi-arid, desert, arid region or the semi-arid region, and finally the highland, that is the mountainous area. Now we can look the subdivision of all each of these. Tropical area में क्या क्या आता है, dry area में look at the नाम तो याद रखना है. A means tropical, B dry, C आता है mid latitudinal, D आता है because when you are studying about the Köppen हो, त्रिवार्ता का हो, थ्रॉनविट्स का जो भी हो climatic classification के बारे में when you are studying, I don't think it is required for all because it is not mentioned the name of. Here it is just said as world climate. So जब you are studying, you can see these letters. Tropical region is represented by capital letter A, dry region को B, then mid latitudinal area को C, high latitude को D, and he also called होगा
ना ये तो हाईलैंड का होगा. It is represented by this letter itself. Now, when we look at the subdivisions, the first division comes is tropical wet. Tropical region ka, I have already told you, there will be very high temperature, average temperature high होगा, rainfall भी high होगा. तो tropical wet का क्या मतलब है? यहाँ the average temperature is of 80 degree Fahrenheit. उतना सा ज्यादा है. Almost 23-24 degree Celsius में बोलने से उतना सा average आ जाएगा this tropical region. And the rainfall, the continuous rainfall है. अभी इक्वेटोरियल रीजन का एक स्पेशलिटी है, देयर विल बी 4 o'clock लेट. सुबह टाइम में, इन द मॉर्निंग टाइम, बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ हीट, कंटिन्यूस हीट है, वो सनलाइट से इंसुलेशन बहुत ज्यादा इक्वेटोरियल रीजन में ही आता है, तो उधर गर्म होगा, तो एयर विल लिफ्ट अप, वो तो अप आएगा, ऊपर आ जाएगा, एंड इट विल कंडेंस एट द आफ्टरनून, एंड एट द इवनिंग टाइम नियर टू 3 and 4 o'clock देयर विल बी रेन शावर्स. रेन होगा उधर उसी टाइम. So daily होगा, almost every day there will be rainfall. तो बहुत ज्यादा precipitation peak है. And annual, if you look, the annual average rainfall is more than 80 inches है. उतना सा ज्यादा rainfall है. So that is called the tropical wet climate. If you look, this is the equatorial line. ऐसा एक तो equatorial line जा रहा है. If you look, इंडिया के नीचे, इंडिया 8 डिग्री में है, तो ये है, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन. तो ऑन द टू साइड्स ऑफ इक्वेटर यू कैन सी दिस ट्रॉपिकल वेट. वेट कैसे होगा? अभी देखो, ये पूरा जगह मॉइस्चर कंटेंट होगा. यहाँ दिस इज ओशियनिक एरिया. यहाँ से पानी को लेकर यहाँ डाल देगा, कॉन्टिनेंट के अंदर जो एरिया है उधर डाल देगा. That is why it is known as the tropical wet climate. Tropical monsoon climate भी है, but that is usually happens locally. So it is also known as the tropical wet and dry climate. Local area में much effective है, like Indian subcontinent में monsoon का बहुत ज़्यादा influence है. But even if we look, it is happening in Africa में है, it is happening in South America में है, but it is not that much influencing. In the tropical, ये जो region है, Indian subcontinental region है, उधर ही मानसून का too much of influence है. इधर कैसे है? ट्रॉपिकल वेट में कंटिन्यूस वेट है, थ्रू आउट डेली उधर बारिश गिरेगा. बट इन ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई में देयर इज सम डिफरेंस. There is seasonal rain. कुछ time there will not be any rain. Like अभी इंडिया में देखो, जून, जनवरी, फरवरी, असली in mainland I am saying जनवरी, दिसंबर, नवंबर आधा के बाद, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक बारिश नहीं होगा. that will be very less. But from June, July, August, southwest monsoon का influence है. Then सितंबर थोड़ा कम होगा, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर नॉर्थ ईस्ट मानसून का इन्फ्लुएंस. सो देयर विल बी रेनफॉल. सो ऐसा सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है. सब रीजन हैज अ रेनी सीजन इन समर एंड अ ड्राई सीजन इन विंटर. क्या हो गया? जून में द सन विल कम, कहाँ होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द मिडिल ऑफ इंडिया, इंडिया के सेंटर यहाँ तक आ जाएगा सन, जून. But what happens in June? There is rainfall. So India comes under the scope of this area, tropical wet and dry. Occurs mostly between 5 degree to 20 degree latitude. So as India's latitude extension, it is almost 8 to 32. So almost the entire area, or 3/4 of the area, comes under this climate, tropical wet and dry climate. Look at the temperature. The average temperature is between 66 degree to 68 degree Fahrenheit winter season. And in summer season,
ऑलमोस्ट सेम एट द ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट में जो इतना 80 डिग्री था तो उतना तक आ रहा है इधर टेम्परेचर। एंड कमिंग टू द प्रेसिपिटेशन, सी उसमें 80 डिग्री था, सॉरी 18 इंचेस था, इधर दिस विल ऑलमोस्ट 70 इंचेस रेनफॉल। तो ड्राई सीजन में 20 इंचेस तक है, बर्थ कम है, बट इन समर सीजन देयर इज टू मच ऑफ रेनफॉल। तो इट कम्स नेक्स्ट टू ट्रॉपिकल वेट। तो कहाँ पर है? अफ्रीका में है, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में है, पार्ट्स ऑफ एशिया में है। इफ यू लुक हियर यू कैन सी इंडिया, दिस रीजन। तो यहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है। तो ये हो गया टाइप ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट। वन इज ट्रॉपिकल वेट, सेकंड वन इज ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट और द मानसून क्लाइमेट हो गया। देन सेमी एरिड और द सावन्ना क्लाइमेट। यहाँ there is very less precipitation birth कम है because it is dry. Maximum on an average there will be only 16 inches of rainfall, उतना precipitation है, birth कम। But when you look, the cold region has, आज अभी desert बोलने से इसका मतलब ये नहीं है कि there is hot, there is cold desert also। जैसे पामिर का वो रीजन है, नहीं तो चाइना में वो गोपी है, ये सब दैट कम्स अंडर कोल्ड डेजर्ट रीजन है वो रीजन। तो थिंग इज दैट डेजर्ट विल बी ड्राई ऑलवेज, उधर बारिश कम होगा, देन वी कैन से इट एज डेजर्ट रीजन और द एरिड और द सेमी एरिड रीजन। तो क्लाइमेट इन द कोल्ड रीजन विल गो बिलो 64 डिग्री एंड इन हॉट रीजन it is always more than 64 degree Fahrenheit. ऐसा है, 64 means 18 डिग्री सेल्सियस। तो 18 डिग्री सेल्सियस के कम आगे आएगा कोल्ड में, एंड हॉट टाइम में इट विल गो मोर देन 64 डिग्री सेल्सियस। हॉट डेजर्ट में ऐसा है, और हॉट सेमी एरिड रीजन में यूजुअली द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के ईस्टर्न रीजन, ये सब रीजन यूजुअली वी कैन से ऐसा सेमी एरिड रीजन है। There will be less rainfall and winters are mild to cold होगा semi arid region में, and some arid regions location can be produce snow। वही है cold desert region, तो उसी टाइम में उधर स्नो भी होने का चांसेस है। and it is usually found in the interior of the continent, that is why I said the central part of India। अभी बोलने से इंडिया का जो सेंट्रल एरिया है उधर है, नहीं ये तो वो डेजर्ट रीजन है हमारा तार डेजर्ट, नहीं तो राजस्थान, वो उसके सामने जितना भी एरिया हो, जो सामने वाला एरिया है, that comes under the scope of this semi arid region। precipitation is very less, near to 16 inch, and the temperature in cold temperature ऐसा नहीं बोल पाएगा temperature सबसे ज्यादा है, it's not like that। in hot desert temperature ऐसा है, and another thing is that day and night temperature variation is also very high। day में temperature बहुत ज्यादा होगा in hot desert, and in the cold, in the night time there will be very cold climate। so within the same day there will be wide variation in the temperature, that is semi arid region। if you look, these are the semi। अभी इंडिया में देखो जो सेंटर कॉन्टिनेंट का सेंटर एरिया है, अभी चाइना, ये सब रीजन, अभी ये तो आपको अभी पता होगा ये रीजन हमारा क्या था वो भूल गया। तो ये सब रीजन में यू कैन सी दिस। सो इट इज आल्सो नोन एज आई सेड स्टेपी क्लाइमेट, ये याद रखना है। देन कम्स द डेजर्ट। दिस अभी नाम देखो, इट इज एक्चुअली बी क्लाइमेट के नीचे आएगा, सेक्टर बी। देन कम्स द डेजर्ट रीजन। तो सेमी एरिड रीजन में थोड़ा पानी होगा, बट यहाँ बहुत कम है पानी। तो रिसीव लेस देन 10 इंचेस, उसमें 60 इंचेस था, यहाँ 10 इंचेस के जो नीचे होगा, यहाँ डेजर्ट रीजन में पानी। एंड यहाँ हॉट डेजर्ट होगा, लो ह्यूमिडिटी
high temperature during day, and at night the temperature will drops down. And usually the temperature is over 100 degree Fahrenheit. उतना सब almost the same character of the semi-arid region, and arid region में ऐसा है दोनों semi-arid region में if we can give irrigation, there is possibility of agriculture. That is the main difference. तो डेजर्ट में ऐसा नहीं है, वो पूरा ऐसा मोस्टली इट इज विद हमाडास होगा ना, ये तो सैंड ड्यून्स होगा. दैट इज प्योर डेजर्ट. इट इज वेरी difficult to stay there. That much of temperature variation is also there. The temperature sometimes in summer time, the temperature will go beyond 100 degree Fahrenheit. And cold desert में ऐसा है, summer temperature are warm. Warm means still it is very low. Maximum 80 to 20 degree Celsius के सामने ही temperature आ जाएगा cold desert में. But in winter season, it will be quite very low temperature, and even it's reached to freezing point. Cold temperature below 25 degree Fahrenheit के नीचे भी, that is almost 0 degree के सामने भी आएगा in desert, cold desert region में. And let's see, if you look, this is Sahara desert, that's we know ना. यहाँ गोबी desert है, हमारा थार desert है, ऑस्ट्रेलियन यहाँ वो इंटीरियर रीजन में, यह सब डेजर्ट और एरिड रीजन के साथ में आता जाए. इफ यू लुक, इट्स आल्सो स्टार्ट फ्रॉम बी, रिमेनिंग बी डब्ल्यू बहुत कुछ है, इट्स नॉट रिकॉर्ड राइट नाउ. तो ये सोचो बी इज डेजर्ट रीजन और एरिड रीजन. देन द थर्ड ग्रुप, दैट इज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट. तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हो गया कहाँ, ऑलमोस्ट मिड लैटिट्यूड में आ रहा है, नॉट प्योरली और नॉट 100%, बट ऑलमोस्ट इन, इफ somebody asks, you can say it is in mid latitudinal areas between 30 degree and 40 degree latitude में ये आएगा Mediterranean climate. Because if you look at this picture, this is the Mediterranean Sea area ना, तो इसके सामने जितना भी countries हो, most of the countries have the same climate. अपना सा एक इंडिविजुअल क्लाइमेट है. तो क्या है, माइल्ड वेट विंडर्स होगा, विंटर में वेट होगा, बारिश होगा, एंड देयर विल बी वार्म टू हॉट ड्राई समर्स होगा. समर इज हॉट, विंटर इज मॉइस्चराइज्ड, वेट. दैट इज द डिफरेंस. यूजुअली occurs on the western side of the continents between 30 degree to 40 degree latitude. If you look here, ये वेस्टर्न साइड में है, ये भी वेस्टर्न साइड में है. इफ यू लुक सम ऑफ द डेजर्ट आल्सो, यू कैन सी द वेस्टर्न साइड. तो ड्राइनेस इज पेक्युलर एट दिस पॉइंट आल्सो, एंड as this is in the mid latitude, the rainfall is also average. डेजर्ट जैसा उतना कम नहीं है, बट फिर भी यहाँ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में भी रेनफॉल इज कंपैरेटिवली लेस. रेनफॉल ही है लेकिन कंपैरेटिवली लेस है. तो अभी ये टर्म याद रखना है, एंड फ्रॉम द लोकेशन यू कैन easily say that what is the kind of temperature there and what is the kind of precipitation there. You can easily say that this comes under the mid latitude, so temperature will be average and the rainfall will be average. That is the Mediterranean Sea climate. This is in the mid latitudinal areas. Then come humid subtropical. ट्रॉपिकल एरिया हो गया, उसके ऊपर है मिड लैटिट्यूड. मिड लैटिट्यूड में आएगा सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन हो गया मिड लैटिट्यूड एरिया में. तो ह्यूमिड मींस, तो यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है. दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज ह्यूमिड ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन. तो लॉन्ग पीरियड्स ऑफ समर होगा, हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी. तो हम यहाँ बोल दिया है हीट है, बट it maximum reach up to 81 degree Fahrenheit. But if you look the coldest month, there will be cold time also. That is almost 41 degrees Celsius. So average temperature is average here. लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में क्या ऐसा है, 64 to 70 है डिग्री फ़ारेनहाइट, नहीं तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, उतना ज्यादा है. तो मॉडरेट हो गया, यहाँ थोड़ा कंपैरेटिवली लेसर है. That is humid subtropical region. And usually
ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, वो पहले बोल दिया मेडिटेरेनियन हो, सेमी एरिड हो, दैट कम्स अंडर द वेस्टर्न कोस्ट में है. नाउ इट्स कम्स अंडर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स and are often subject to hurricane. ये सब यही region में usually happens. We know that American region, अमेरिका का उधर ही hurricane ज्यादा हो रहा है. That is temperate cyclones भी उधर हो रहा है. Annual precipitation देखो, this is also average 39 degree, sorry 39 inches है. वो equatorial, yes. Is this ये जो है humid subtropical और Mediterranean जो climate है, it is the subtropic of this dry B1. B नहीं, C में B का subtropic है क्या? C का है ना? B का complete हो गया. B में वो आ गया semi arid हो गया. B का semi arid and desert ना? Desert. Okay, only okay. dry areas. Okay, this is subtropic of C. Yes. Okay. तो ये हो गया. इसके नीचे वो सबट्रॉपिकल रीजन में, सबट्रॉपिकल रीजन ह्यूमिड रीजन में है, दैट इज मिड लैटिट्यूडनल है. यहाँ क्या है, टेम्परेचर एवरेज होगा, रेनफॉल भी एवरेज होगा. टेम्परेचर मैक्सिमम अप टू 81, बट ऑन एन एवरेज इट विल बी 60 और 50 और 60 के बीच में है. लोवेस्ट कम आएगा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट तक. तो एवरेज टेम्परेचर हो गया. ऑन द ऑपोजिट साइड प्रेसिपिटेशन देखो, दिस इज आल्सो एवरेज 39 इंचेस. इक्वेटर रीजन में आएगा 80 इंचेस तक आएगा. तो यहाँ इसका आधा है. तो ऑलमोस्ट इन द मिडिल रेंज ऑफ precipitation will happen in this area and it covers southeastern part of United States. ये जो जगह है, तो यहाँ this is oceanic area है. If you look, you can see this entire area is oceanic. So there will be influence of, that is why there is almost, you can see every area has oceans nearby. ये सब जगह है, उधर सामने पानी का एक तो ऑप्शन है. दैट इज वाई देयर इज हाई ह्यूमिडिटी. सब अभी इंटीरियर रीजन में देखो कहीं पे नहीं है. वाई? देयर शुड बी ह्यूमिडिटी, देयर शुड बी मॉइस्चर कंटेंट. सो दैट इज वाई इट इज लोकेटेड लाइक दिस. आज विंटर्स आर माइल्ड टू कोल्ड होगा, और विंटर में भी टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा, इसलिए वो माइल्ड टू कोल्ड होगा. वी नो दैट. अभी हमारा वो आगे हाई लैटिट्यूड जाते जाते टेम्परेचर कम होते होते रहेगा. टेम्परेचर विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज. सो हियर आल्सो विंटर इज माइल्ड, मैक्सिमम माइल्ड तक आएगा, टू कूल में जाएगा. एरिया इज 25 डिग्री टू 40 डिग्री. ये पूरा इसका एक्सटेंशन इसी एरिया पे है. इकट्ठे से धीरे धीरे जा रहा है. देन सब आर्टिक रीजन, ये हो गया अभी हाई लैटिट्यूड. वी आर गोइंग टू हाई लैटिट्यूडनल एरियाज. दैट मीन्स ऑलमोस्ट डी में आ गया है. सो सब आर्टिक, तो आर्टिक अंटार्कटिक रीजन दैट इज ऑलमोस्ट नियर टू द पोलर रीजन है. सो सब आर्टिक से देयर स्टार्ट द कोल्ड एरिया. पूरा टेम्परेचर कम होगा इधर. टाइगा फॉरेस्ट अभी कोनिफरस फॉर ये सब आता है ना, टाइगा फॉरेस्ट कवर इसी रीजन में है, मोस्टली कवर्ड विथ this coniferous forest area होगा. Huge temperature variation occurs in sub regions between summer and winter. तो ऐसा नहीं है एक में 50 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा 20 डिग्री सेल्सियस है. ये तो ऐसा नहीं है. दोनों कोल्ड है, लेकिन एक हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे, वो 0 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे जाएगा. इसलिए तो देयर इज ह्यूज वेरिएशन. और टेम्परेचर वेरिएशन का मतलब ये नहीं है एक तो गर्म है एक तो ठंडा है, ऐसा नहीं है. दोनों ठंडा होगा, बट इन कोल्ड सीजन द टेम्परेचर विल गो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज देयर विल बी ह्यूज वेरिएशन. सो समर इज आल्सो कोल्ड एंड विंटर इज आल्सो कूल, बट विंटर इज वेरी मच कोल्ड. Lies between 50 degree to 70 degree north, as it is Arctic region. Antarctica nahi hai. Arctic region we know that it's northern. So this region is existing mainly in the northern hemisphere mein hai. If you look here, you can see the picture. It is mostly concentrated in the northern hemisphere. High latitudinal area hai.
Look at the temperature. The average temperature is 40 to 58 degree Fahrenheit. Sometimes it go below freezing point as well. So temperature बहुत कम हो गया. 40 means almost 10 degree Celsius उतना तक ही आएगा maximum. Freezing point कुछ time तो 0 degree के नीचे गया. And look at the precipitation. Precipitation is comparatively higher in the polar region, but when comparing to equatorial region or mid latitudinal areas, the precipitation start lowest average will come to 20 degree, maximum up to 20 inches. Lowest comes into 20 inches, maximum reach up to, and in particular cases near to the marine area, near to the oceanic area, there will be, because of the presence of this moisture, there will be maximum of 50 inches, but most of the area there will be 30 to 35 degree, inches rainfall मिलेगा. So why है subarctic region? Precipitation का भी moderate है, temperature बहुत कम हो गया है. Now the tundra region. यहाँ देखो, यहाँ टाइगा में क्या था और subarctic region में क्या था? Rainfall थोड़ा अच्छा, precipitation थोड़ा अच्छा था, temperature बहुत कम हो गया. But here कैसा है? In tundra region, both will come down. Precipitation भी कम है, temperature भी बहुत कम. And flat treeless lands forming a ring around the Arctic Ocean are called the tundras. तो आर्टिक ये ऊपर वाला जो ओशन है, ये जो रीजन है, इसका जो सामने वाला एरिया है, सॉरी ये सब दिस इज आर्टिक एरिया, इसका जो बाउंड्री में जो एरिया आ रहा है उसी एरिया, इसी एरिया को वी कैन से इट एज टुंड्रा रीजन, almost near to the poles, very cold, 60 degree to 70 degree north latitude में इसका distribution होगा. Very little precipitation, maximum up to 15 inches. That means very less. And along with that, there will be permafrost. That means the area, the soil is mostly frozen in, mostly freezed condition में है. Permanent ice का frost, permanent frozen ice होगा उसी region में. That is why it is known as permafrost. Temperature will always remain cold. The temperature may reach slightly above 40 degree Fahrenheit during summer season. So 40 degree means still it is very close. So 10 degree Celsius उतना के उसके नीचे भी आ जाएगा always. Then comes the ice capped area. So this is also comes under D. यहाँ कैसा है? पूरा टेम्परेचर बहुत कम है and precipitation is almost 0 है, फिर भी near to 10 inches के वो सामने आ जाएगा. तो वो छोटा सा एरिया होगा, but the temperature is very low. No months above 32 degree Fahrenheit. 32 degree Fahrenheit almost 0 हो गया. 0 डिग्री के ऊपर कभी भी नहीं आएगा. डिग्री सेल्सियस के ऊपर यहाँ कोई भी मंथ में नहीं आएगा. That is the extreme end. ये अभी इधर देखो, वो ग्रीनलैंड के एरिया और यहाँ अंटार्कटिक रीजन. If you look, you can see the blue color. इसी जगह पे कंटिन्यूअस फ्रोजन आइस होगा, परमानेंट फ्रीज्ड एरियास होगा, परमाफ्रॉस्ट होगा उस पूरा एरिया में. That is why it is known as the ice capped area. Even the precipitation, there is no snowfall. उधर snowfall नहीं है क्योंकि precipitation बहुत कम है. Precipitation उधर, as we know, this is cold area. Precipitation happens to snowfall होगा, नहीं तो ice fall होगा. ये दोनों उधर बहुत कम है, almost no, nil है. That is why it is known as ice capped area. And the average record आया है 128.6 degree below freezing point. 0 degree के वो जो freezing point है उसके नीचे 128 degree Fahrenheit तक कम हो गया है इसी एरिया में. And this, if you look, this will be in Antarctic region में है and Greenland region में. You can see the presence of this ice capped area. So this comes under D. And finally, the highlands. Highlands
is usually said as alpine climate. Alpine climate बोलेगा यहाँ it will जैसे हम लोग बोल दिया है इक्वेटर टू पोल में जैसा बोल दिया है जैसा वेरिएशन टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में जैसा वेरिएशन बेस्ड ऑन आल्टीट्यूड हाइट के वजह से ये चेंज होगा क्लाइमेट का चेंज होगा दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड सेपरेटली हाईलैंड एरिया यूजुअली हैपेंस इन रगड माउंटेन एरिया फॉर एग्जांपल हमारा हिमालय एरिया ना ये तो आल्प्स रीजियंस रॉकीज रीजियन जो भी माउंटेनियस एरिया है हमारा अर्थ में दैट ऑल कम्स अंडर दिस हाईलैंड क्लाइमेट वेरी विथ आल्टीट्यूड ऐसा नहीं बोल पाएगा दिस इज द क्लाइमेट ईयर ऐसा नहीं बोलेगा इट विल वेरी आल्टीट्यूड और लैटिट्यूड में भी चेंज होगा अभी एक हो गया इक्वेटर रीजन में माउंटेनियस एरिया तो उसका क्लाइमेट अलग होगा वो अभी टेम्परेट रीजन में आने से उसका टेम्परेचर अलग होगा पोलर रीजन में आने से भी वो इसका टेम्परेचर अलग होगा तो लैटिट्यूड बेस इसका चेंजेस होगा एलिवेशन हाइट बेस इसका चेंजेस होगा टॉपोग्राफी बेसिस इसका चेंजेस होगा कॉन्टिनेंटल लोकेशन बेसिस आल्सो इसका चेंजेस होगा देयर इज नो परमानेंट ऐसा क्लाइमेट है ऐसा नहीं बोल पाएगा बट व्हेन द हाइट इंक्रीजेस द टेम्परेचर विल कम डाउन when the latitude will change low latitude से high latitude जाने से temperature will come down अगर टॉपोग्राफी है तो अदर टॉपोग्राफिकल चेंजेस भी होगा एक साइड में माउंटेन का एक साइड में पानी ज्यादा मिलेगा प्रेसिपिटेशन ज्यादा मिलेगा if it is a windward side there will be too much of rainfall and on the opposite side in the leeward side there will be dry areas तो एक साइड में ड्राई होगा एक साइड में ज्यादा पानी मिलेगा जस्ट लाइक अभी वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट ये साइड में ऐसा है हमारा हिमालयन का भी यूजुअली वी नो दैट इन द सदर्न एरिया देयर विल बी टू मच ऑफ रेनफॉल हो रहा है एंड इफ यू लुक ऑन द ऑपोजिट साइड लीवर्ड साइड में रेनफॉल कम है वी आर ऑन रेनफॉल एरिया में है so that is called the highland if you look these are Himalayan region जहाँ पे ये हिली एरिया अभी किलिमंजारो ये है तो ऐसा पूरा रीजन में we can see the presence rockies है सब mountain comes under the highland region so this is the general classification of world climate अभी जो भी हो जिसका भी हो if you look you can understand वो हम नोट वो सर को देगा सर आपको आप लोगों को फॉरवर्ड कर देगा तो बना के हम वो देगा उसी में हम ये भी क्लासिफिकेशन देगा बट इट इज नॉट नेसेसरी एज इट इज नॉट गिवन इन द सिलेबस इस एरिया में कुछ डाउट है नो सर सर कौन सा ए है बी है वो उसको लिख देने से ठीक था सर इसमें दिया है ना वो हाँ ये देखो ये बी सी डी ई ना तो इसमें ट्रॉपिकल लिखा होगा ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई ये हो गया फिर सेमी ड्राई में एरिड सेमी एरिड है ना डेजर्ट रीजन वो बी में आ गया तो वो मेडिटेरेनियन वो ह्यूमिड वो रीजन हो गया वो मिड हो गया फिर सेमी आर्टिक ने ये तो ये पोलर रीजन ये सब बोल दिया ना वो सब टाई का टुंड्रा ये सब बोल दिया ना ये सब आएगा डी में फिर हाईलैंड में आएगा ई ये पढ़ने से हो गया ओके ए बी सी डी ई okay can we stop for the day Okay. Okay sir thank you sir